हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी टू explain the lesson from class 11 English, We Are Not Afraid to Die. Okay, so here is the explanation of the story, and actually I have covered the important sections of the story only. Okay, I did not cover up the entire text, only the important sections which are important for you in the exam. It is because otherwise the video will become very longer and it will be very difficult for you to follow also. So the video is going to be very short, not very big, and covering only the important sections of the story. Okay, so without further delay, let us start the explanation of the story. We are not afraid to die if we all can be together. Now the story starts in this way. Okay, I have divided the story into different sections, into different parts for all of you to understand better. So the first section is the ambitious voyage. Okay, so there is a character called Gordon Cook, his wife Mary, their children Jonathan, who is 6 years old, and Suzanne, who is 7 years old, who plan a world tour on their boat Wave Walker. तो जोनाथन 6 साल की और सुजैन 7 साल का, वो एक वर्ल्ड टूर प्लान करते हैं उनके बोट में, और बोट का नाम है वेव वॉकर. ओके, बोट का नाम क्या है? वेव वॉकर. आपको इतना याद रखना है, ठीक है. तो गॉर्डन कुक, उनका वाइफ मैरी और उनके बच्चे जो है जोनाथन और सुजैन, उनके बोट में ट्रेवल कर रहे हैं. बोट का नाम क्या है? वेव वॉकर. प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टोरी. ओके, so they spend years preparing for the trip, building and equipping the boat and training in sailing. तो वो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं ये बोट प्रिपेयर करने के लिए. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम for the trip, building and equipping their boat with the necessary things, and they also took training in sailing. क्योंकि वो एक वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, they need the necessary training also in sailing. तो वो necessary sailing में जाने के लिए they also take the required training. ठीक है. And the journey starts in July 1976 from Plymouth, England. So you have to remember, this is also important, you have to remember one thing, that journey start होता है Plymouth, England से, and in which year? July 1976. Okay, so please remember this much. Now the next section is initial journey. So the family sails down the west coast of Africa to Cape Town, which is in South Africa actually. ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू होता है ये जर्नी टू केप टाउन, विच इज इन साउथ अफ्रीका. ओके, वेस्ट अफ्रीका से साउथ अफ्रीका. एनकाउंटरिंग स्मूथ सीज एंड प्लेजेंट वेदर. तो इनिशियल इन देयर इनिशियल जर्नी एक्चुअली द सी इज वेरी स्मूथ, द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, सो दे डोंट एनकाउंटर एनी स्ट्रगल. तो कोई स्ट्रगल नहीं है. तो केप टाउन, तो वेस्ट अफ्रीका से लेके साउथ अफ्रीका तक, ओके, केप टाउन उनको एनकाउंटर होता है स्मूथ सीज एंड प्लेजेंट weather. Okay, then there are two professional crew members. एक का नाम है लैरी विजिल और एक का नाम है हर्ब सेगलर. ओके, सो टू प्रोफेशनल क्रू मेंबर्स, लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर. they also join them for the dangerous leg of the journey across the southern Indian Ocean. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों प्रोफेशनल क्रू मेंबर्स को who join them for the dangerous leg of the journey across the southern Indian Ocean. ठीक है, just let me repeat once again, two professional crew members, because you see without professional crew members they will not be able to make this journey at all. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हायर किया था दो professional crew members, and now from Africa they go to the southern Indian Ocean. Now the next section is approaching danger. So as they enter the southern Indian Ocean, the seas become rough with towering waves and strong waves. तो जैसे वो अफ्रीका से आप साउदर्न इंडियन ओशियन में एंटर करते हैं तो द सी बिकम्स वेरी रफ. ओके, वेरी रफ, ह्यूज वेव्स विथ टावरिंग वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. तो बहुत ज़्यादा विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है और बहुत रफ वेदर है, एंड द सी बिकम्स वेरी वेरी रफ. ठीक है, आपको इतने याद रखना है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑन January 2nd a massive wave strikes the wave walker causing significant damage. ठीक है, तो उनका बोट का नाम क्या है? द नेम ऑफ द बोट इज वेव वॉकर. तो जनवरी 2 तारीख को मैसिव वेव, ओके, मैसिव वेव, अ बिग वेव strikes the boat
wave walker, and it causes huge damage to the parts of the boat. Okay, not the entire boat, but parts of the boat is heavily damaged. ठीक है? Okay, so the next section is the crisis, the problem actually. All right, so Gordon is thrown overboard but manages to hold onto the lifelines and climb back onto the boat. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गॉर्डन जो है वो पानी में गिर जाता है, बट समहाउ ही होल्ड्स ऑन टू द लाइफ लाइन्स, एंड समहाउ वो जो लाइफ लाइन्स है मतलब जो प्रोविजन है बोट में उसको वो होल्ड करता है, एंड ही क्लाइम्स बैक ऑन टू द बोट, वो बोट के अंदर फिर से क्लाइम करता है. नाउ द वेव डिस्ट्रॉयज पार्ट्स ऑफ द बोट, जैसे कि मैंने कहा इंक्लूडिंग द स्टारबोर्ड साइड, एंड फ्लड्स द कैबिन्स. तो जैसे कि मैंने कहा that the wave actually, the huge wave, it destroyed not the entire boat but parts of the boat. तो boat के कुछ parts को बहुत ज़्यादा heavily damage कर दिया, including the deck, the starboard sides, and then water, you know, huge amount of water entered the boat, including all the cabins. जो boat के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं, the small cabins inside the boat, the entire, all the cabins got heavily flooded. Okay, पूरा बोट पूरा फ्लड हो गया और पार्ट्स ऑफ द बोट डैमेज भी हो गया. एंड नाउ हियर यू सी दैट एवरीवन वर्क्स टायरलेसली टू पंप आउट वाटर एंड पैच अप द डैमेज्ड बोट. ठीक है, पंप आउट वाटर एंड पैच अप द डैमेज्ड बोट. तो सब लोग जो है मिलके यहाँ पे मेहनत करते, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर टू पंप आउट द वाटर दैट एंटर्ड द कैबिन्स. ओके, एंड पैच अप द डैमेज्ड बोट. ओके, पैचअप का मतलब यहाँ पे रिपेयर करना. ओके, पैचअप हियर मीन्स रिपेयर द पार्ट्स ऑफ द बोट विच हैव बीन डैमेज्ड. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज चिल्ड्रंस करेज. यहाँ पे चिल्ड्रंस करेज इज द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, यहाँ पे बच्चों का करेज दिखाया जाता है. उनके जो दो बच्चे हैं, ओके, जॉनथन एंड सुजैन. सो जॉनथन, डिस्पाइट बीइंग स्कैर्ड, रीअश्योर्स हिज फादर saying we are not afraid to die if we can all be together. Now जोनाथन का स्टेटमेंट इस स्टोरी का टाइटल बन जाता है. द स्टेटमेंट ऑफ जोनाथन बिकम्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी. तो जोनाथन इज अफ्रेड, हु इज नॉट अफ्रेड, कम ऑन, बट डिस्पाइट बीइंग अफ्रेड ही रीअश्योर्स, ही गिव्स होप टू हिज फादर दैट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. सी हाउ स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस दिस 6 साल का बच्चा, दिस 6-year-old child is, this 6-year-old kid is. Okay, he is giving hope to his father. He is so courageous. Okay, and he tells that we are not afraid to die if we can all be together. Even Suzanne also, she also shows strength even though she suffers serious injuries including a swollen head and deep cuts. ठीक है, तो यहाँ पे सुजैन भी बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है. You know, despite the fact that she is actually injured, she had it included a swollen head and deep cuts. Okay, तो उसका सर जो है वो भी injured था, and she had deep cuts in her body, but still you see she was so courageous. Okay, उसने भी बहुत ज़्यादा courage दिखाया और वो डरी नहीं. she was not afraid. Okay, she showed courage. Now comes the next section, which is efforts to survive. Okay, here we can see that the crew led by Larry and Herb worked very hard to keep the boat afloat using pumps and makeshift repairs. Okay, तो यहाँ पे क्रू जो है जो कि लैरी और हर्ब, क्रू मतलब द प्रोफेशनल्स, ओके, लेड बाय लैरी एंड हर्ब, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे. वर्क वेरी हार्ड टू कीप द बोट अफ्लोट, मतलब बोट को पानी के ऊपर फ्लोट रखने के लिए, यू नो, इन ऑर्डर टू मेक द बोट फ्लोट ऑन द वाटर दे यूज पम्प्स एंड दे मेक शिफ्ट रिपेयर. मतलब if one gets tired the other one repairs, if the other one gets tired the other one repairs. So makeshift repairs. Okay, and in order to pump out the water throughout the water of the boat they are using pumps also. वो pumps use कर रहे हैं ताकि पानी को जो है बोट के अंदर से बाहर निकाल सके, so that the boat does not sink, ताकि बोट सिंक ना हो जाए, डूब ना जाए. Okay, and Gordon is doing what? Gordon uses improvised materials to strengthen the broken sections of the boat. तो गॉर्डन यहाँ पे जो है इम्प्रोवाइज्ड मटेरियल्स यूज कर रहे हैं. इम्प्रोवाइज मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनोवेटिव. ओके, और ज़्यादा जो है अच्छा मटेरियल्स, गुड
materials to strengthen the broken sections of the boat. Okay, remember that the entire boat is not broken. Okay, only some parts of the boat is broken, and he is working very hard with improvised materials to repair the broken sections of the boat. Okay, next is spotting hope. So after days of struggle, uh, hope is very important here. You see, I'll just read it out later. Hope is very important to survive. Okay, without hope nothing can happen. So they spot a hope. अब ये होप क्या है ये हम लोग देखेंगे, विल सी दिस. सो आफ्टर डेज ऑफ स्ट्रगल, बहुत दिनों के बाद, स्ट्रगल के बहुत दिनों के बाद, ओके, दे स्ट्रगल फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, दे चार्ट देयर कोर्स टुवर्ड्स आइल एम्स्टरडैम, अ स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड विद अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. तो बहुत दिनों के बाद, देखिए वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉट ऑफ डेज, पंपिंग आउट द वाटर, repairing parts of the boat. They now find an island called Isle Amsterdam, a small volcanic island. एक छोटा सा volcanic island है जो कि एक French scientific base है actually. And they sail toward the island despite the battered condition. वो इस island की तरफ sail करते हैं despite the battered condition, मतलब very bad condition of the boat, and somehow they manage to reach it safely. वो जैसे जैसे करके अपने बोट को जो है उस आइलैंड पे लेके जाते हैं safely. See, the condition of their boat is not good, and at that time they detect that island, but they sail safely to that island somehow. Okay, so this is hope. तो उनको hope दिखाई दिया after reaching the island safely. Now, the reaching safely, okay, the family and crew land on Isle Amsterdam, grateful to be alive after their harrowing experience. तो पूरा फैमिली जो है, द क्रू मेंबर्स, दे लैंड ऑन दिस आइलैंड, ओके, आइल एम्स्टरडैम, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल टू बी अलाइव आफ्टर देयर हैरोइंग एक्सपीरियंस, मतलब आफ्टर देयर हेवी स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस, ओके, नियर टू दैट एक्सपीरियंस, दे रीच दिस आइलैंड फाइनली सेफली. ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑन द जर्नी. तो ये जर्नी का जो रिफ्लेक्शन है, दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ द जर्नी. Gordon realizes that courage, determination and hard work helped them survive. So he realizes that courage, determination और teamwork, ये तीनों जो है, okay, courage and determination and then teamwork, okay, these are the three elements that help them survive. So we have teamwork here that help them survive. तो ये तीनों चीजें मिलकर जो इनको जिंदा रखने की मदद करता है. These are the three qualities, okay, that courage, determination and unity, teamwork, that help them survive. ठीक है. अब बच्चे जो है, the children's bravery and optimism मतलब hope, ठीक है, optimism means hope. So bravery and hope of the children actually, okay, that inspires the adults. Okay, ये बच्चों के जो bravery है, hope है, that inspires the adults to continue fighting during the ordeal. Ordeal यहाँ पे मतलब, ordeal मतलब struggle यहाँ पे, ठीक है. तो आप देखिए कि you can just imagine that the bravery, generally it is the adults who inspire the children. Okay, ordeal. Ordeal का मतलब ये मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, it means struggle. Okay, once again, anyways, so you see that adults generally they inspire the children, but here it is ulta, reverse. The children, the two children, they are actually inspiring the adults to continue fighting during the ordeal, the struggle. तो यहाँ पे बच्चे जो है बड़ों को यहाँ पे ऑप्टिमिज्म दे रहे हैं. Then we have Jonathan's statement here, and that is the title of the story. तो Jonathan's statement, okay, ये जो बच्चा है 6 साल का, उसका statement देखिए, that becomes the essence of the survival. We are not afraid to die if we can all be together. Okay, तो यही जो है, this statement becomes the title of the story. ठीक है, this statement becomes the title and Jonathan is a kid only. Jonathan यहाँ पे एक बच्चा है. तो उस बच्चे का जो ये लाइन है, that we are not afraid to die if we can all be together. ठीक है. अब what is the message of the story? तो message of the story can be theme of the story also. So the central message of we are not afraid to die if we can all be together is the importance of courage, resilience and teamwork, and we have unity here. So teamwork and unity almost means the same. तो यहाँ पे basically जो qualities were courage, resilience, determination, teamwork and unity,
okay, and that happens in the face of life's greatest challenges. So even if you apply these qualities in your real life also, you will see that in the face of the greatest challenges of your life, if you have these qualities within you, then you will overcome the greatest difficulties, the greatest challenges. Okay, courage, resilience, teamwork, unity, these are the qualities. And if we also have these qualities inside us, then we can face any problem. No problem can cause any harm to us. कोई भी problem हमें इतना trouble नहीं दे सकता. This is one message of the story. Okay, we'll move on to other messages also, other themes also. Next we have is courage in adversity. Adversity, okay. Adversity क्या है? Adversity means, adversity it means bad times. खराब समय जो हमारे जिंदगी में होते, इसका meaning है adversity. Okay, the bad times. Okay, so you see here in the story that the story shows that courage can help individuals face even the most life-threatening situations, and the family and crew remain strong despite fear and uncertainty. Okay, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं? What do you see in the story? That even in the most life-threatening situations, okay, adversity, you show courage. Courage ही एक चीज है which can help individuals face even the most life-threatening situations. ठीक है, जानलेवा situations जो है वो भी आप face कर सकते हैं. That also you can face if you have courage, and even teamwork and unity also. So you see from this story, the example that we see is that family and the crew remain strong. Remain strong. Survival. The survival is very, very important. So they remain strong so much that they finally survive, and they do not know what is going to happen next. So this is uncertainty. Whether they will live or die, they do not know. Death was actually confirmed, but because they remained together, they worked with unity. That is why they survived also. Alright, उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि वो because they were courageous, because they all worked together, that is why they survived. Okay, I hope you have understood. Then comes the power of unity and love. This is the next theme actually. Okay, so the title itself emphasizes that love and togetherness give people the strength to endure hardships. Jonathan's assurance that he is not afraid as long as they're together reflects this theme. So you can use these messages or themes in your answers also. Okay, no problem at all. And I have also uploaded the notes on my website. मैंने notes website में डाल दिया है. Textbook notes, you can check out those notes from my website. The link of my website is given in the description box, www.omnigyan.net. तो पूरा notes मैंने दे दिया है. I have provided a summary also. मैंने summary भी डाल दिया है. तो यहाँ पे Jonathan's assurance that he is not afraid as long as they are together reflects this theme. Okay, तो टाइटल देख के आपको पता चल जाता है. By looking at the title also you can easily understand that love and togetherness, that means एक दूसरे के साथ जो प्यार है, the bonding and togetherness, that we all will work together because we all love together, that becomes the strength of the story. So I'll just take you a little bit back here. You see that message of the story is actually the theme of the story. ठीक है, message ही theme है. Okay, I hope you have understood this thing, that it is the courage in adversity. This is one theme. Okay, ये एक theme हो सकता है. और the next theme is the power of unity and love. Okay, then we come to the next one, the next theme, importance of perseverance. Okay, perseverance मतलब not surrendering at all. ठीक है, so the families and crew's determination to repair the boat and survive against all odds show the value of perseverance. तो यहाँ पे determination, family का determination, family और crew दोनों का, not only family, the family and crew का determination जो है to repair the boat and survive against all odds. ठीक है, जितना भी आपका खराब सिचुएशन है, उसको जो है फैमिली और क्रू वो जो है फेस करते हैं. ओके, एंड हियर ऑल ऑड्स मीन्स द डिफिकल्ट सिचुएशंस, द स्ट्रगलिंग सिचुएशंस, द प्रॉब्लम्स एक्चुअली. ओके, तो बिकॉज द फैमिली एंड द क्रू दे आर डिटरमाइंड टू रिपेयर द बोट टुगेदर बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव, and that is why they survive, and that is the value of perseverance. They refuse to give up, they refuse to surrender no matter how dire the consequences are.
ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवियरेंस, दे रिफ्यूज टू गिव अप, वो रिफ्यूज करने के लिए पूरा गिव अप वो रिफ्यूज कर देते कि वी विल नॉट गिव अप. एंड डायर हियर मीन्स द डिफिकल्ट और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. ठीक है, डिफिकल्ट हियर, डायर हियर मीन्स डिफिकल्ट या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. सो दे रिफ्यूज टू गिव अप and no matter how difficult or life threatening the circumstances or situations are. ठीक है, I hope you understood. Next one we have hope and optimism. तो यहाँ पे hope और optimism, I'm sorry I have repeated hope, optimism and hope again. Okay, you can skip this. Okay, so optimism and hope is the next theme. All right, and as I told you that you can use these themes in your notes also. I have prepared it in this script so that you can use it in your notes also. ठीक है, और क्वेश्चंस एंड आंसर्स you'll find on my website. The children's optimism, hope and support motivate the adults to continue fighting for survival. तो बच्चों को जो होप है, जोनाथन एंड सुजैन, their hope and optimism, they actually motivate the adults to continue fighting for survival. जीने के लिए जो होप और सपोर्ट है ये बच्चों ने दिया बड़ों को. The children gave to the adults actually so that they can सर्वाइव. ओके, ताकि वो जिंदा रह सके. ओके, तो होप बिकम्स अ गाइडिंग फोर्स ऑफ द ग्रुप, फॉर द ग्रुप, आई एम सॉरी. तो होप एक ऐसा चीज है, होप इज द ओनली थिंग दैट बिकम्स अ गाइडिंग फोर्स ऑफ द ग्रुप. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. एंड द लास्ट एंड द फाइनल थीम इज ह्यूमन स्पिरिट्स ट्रायम्फ ओवर नेचर. ओके, सी वी कैनॉट फाइट अगेंस्ट नेचर. हम कभी नेचर के साथ जीत नहीं सकते फाइट करके. बट देयर आर सर्टेन टेक्निक्स वेयर यू कैन फाइट एंड यू कैन विन ऑल्सो, बिकॉज नेचर विल बिकम योर फ्रेंड एक्चुअली इफ यू हैव द क्वालिटीज. व्हाट आर द क्वालिटीज? आई टोल्ड यू, होप इज देयर, यूनिटी इज देयर, दीज आर द क्वालिटीज. ठीक है, डिटर्मिनेशन इज देयर. तो द स्टोरी सेलिब्रेट्स द indomitable human spirit that can overcome the challenges posed by nature when combined with effort, skill and cooperation. Okay, so the story celebrates the indomitable human spirit. Matlab, indomitable human spirit here means that these human beings in the story you see, they're not ready to surrender. They all work together, they all fight together, they all struggle together. Okay, and with effort, skill and cooperation. What are the three qualities? Effort, skill and cooperation. Okay, so with all their combined efforts, their combined skill and their cooperation, unity, teamwork, they actually overcame the challenge that was posed by nature. They actually overcame the natural calamities, the natural disasters, and they reached safely to that island, Isle Amsterdam. वो लोग उस आइलैंड में जाके पहुंचे. प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द आइलैंड, Isle Amsterdam. It is the scientific base of the French. Okay, so finally human spirit actually wins over nature. Triumph over nature means wins over nature. ठीक है, तो human spirit जो है और ये qualities जो है, it actually wins over nature in the story. Right, I hope you have understood the story very nicely. Okay, now as I told you that I have given all the questions and answers on my website, the textbook questions and answers on my website. Please go and visit my website www.omnigyan.net. You'll find the questions and answers from the story, and even I have uploaded a summary also, a full summary of the story We Are Not Afraid to Die. वहाँ पे जाके आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए. Okay, please follow the website so that you can access to all the notes, and all the notes are absolutely free, no charges at all. Okay, you will find on my website. तो मेरे website पे जाके omnigyan.net, www.omnigyan.net. Okay, you can go and check it out from there. Alright, so finally I'm going to end the video, and the request that I would like to make to you this time, a little emotional, is that please, after watching the video, put a like. Your like gives me a lot of motivation and support, and trust me, I'm going to provide you more and more contents, notes, questions and answers, whatever is required for you to successfully crack your board exams. Okay, your exams, final exams. Okay, तो सब्सक्राइब कीजिए. जो लोग नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and like, and please do share my videos. I'm there on Instagram also. Please do follow me for important notifications, and
प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट लिंक्स. डिस्क्रिप्शन को एक बार इम्पोर्टेंट लिंक्स के लिए चेक कर लीजिए. And you can also scan these codes. I have the Instagram code here, the first one, the second one. I'm there on WhatsApp also. You can follow me on WhatsApp also, no problem. Even if you follow, it is absolutely safe, because I cannot see your number, you cannot see my number, and then I'm there on. You can follow me on my website also, www.omnican.net. You can scan all these things and follow me on my website. So finally, I'm going to end the video with love from Omnican, and all the best to all of you. Thank you so much.